All eyes are now on battleground Nandigram that goes to polls on the 1st of April. Amit Shah upping the ante here has pledged ouster of Dide. Mamta taunting back says BJP will win a big 0 in Bengal. Here's more on what went by. নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না, তাদের একটা জমিদারি চলতো। Mamta Banerjee on tape urging a former Nandigram TMC neta in BJP to return. আমি আজকে কি করতে, এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। Only to be unceremoniously rebuffed. আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেইলসে খবর নিতাম না। The Trinamool chief going all out to woo Nandigram, facing a resolute opponent who knows her every move and has vowed to vanquish her. बंगाल का जो हालत ममता बनर्जी और उनकी भतीजे ने कर दी, उसको पहले टीएमसी को हराना और एक फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना, ये मेरा पहली एजेंडा है। और दूसरी एजेंडा देखिए, पार्टी मुझे बोला नंदीग्राम के लड़ने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। After massive surge in voter turnout, the BJP is already smelling blood. Home Minister Amit Shah predicted a groundswell for the BJP. मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। Mamta knows what she's up against. She has now landed in Nandigram and plans to stay put for the next few days till the last ballot is cast. At a rally, she mocked Amit Shah's claim. बीजेपी एक नेता आज के बोलेছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खावे, रस ছাড়া रसगोल्ला। While Mamta fights her biggest poll battle, BJP and TMC war on Audiogate intensified, with TMC alleging a BJP collusion with poll panel in a bid to counter the Saffron Party. इसमें हमारे दो नेता बात कर रहे हैं, इतनी जगह पे हमने ट्रांसफर के लिए डिमांड करनी पड़े। ये डिमांड तो हमने राइटिंग में रखी है, इसमें टैप की जरूरत नहीं है। তাই দুজন বিজেপি নেতা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা উনি বলেছেন যে খবর নিতে হবে যে এই টেপটা কিভাবে বেরিয়ে এসেছে দুটো বিজেপি নেতা। হতেই পারে, এটাও হতে পারে যে ওই দুজনের মধ্যে একজন টেপও লিক করে দিয়েছে। Now the big questions. Has the BJP managed to confine Mamta to Nandigram? And will the winner of this battle royale take it all in Bengal? With Polomi Saha and Suryagini Roy in Nandigram, Bureau Report, India Today. It's word of audio tapes in battlefield Bengal after BJP released an alleged audio clip of Mamta Banerjee and BJP leader Praloy Roy. TMC's counter audio tape comes next. Party in fact claims that this audio tape is of BJP leader Mukul Roy and Shishir Bajoria discussing what election commission must be told. Here's a listen at this report. The battlefield where futures are at stake. The Karm Bhumi where it is make or break for those fighting here. And on the very day Bengal begins polling in a historically high-stakes election, an audio scandal has exploded right here. First, listen to it. আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না। What you have just heard is a recorded conversation put out by the BJP, allegedly capturing Mamta Banerjee, pleading with the BJP's Nandigram Deputy Chief Pralay Pal for help. With Nandigram going to the polls on April 1st in the second phase, the audio is alleged to show a desperate Didi seeking help from the enemy camp. তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু।
একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে। এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 21 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। Pal claims that Mamta urged him to support her against turncoat Suvendu in his safe seat Nandigram. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে, আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে, তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন, আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। BJP leader Suvendu says Mamta is losing ground and that is why she is approaching his leaders. She lost her battle. She is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. Meanwhile, TMC has accused BJP of staging the incident but applauded Didi for valuing even those workers who have left her. It is a great instance from a supremo like Mamata Banerjee. She had a talk with the Trinamool Congress booth level worker, block level worker. So there is no harm in it, nothing wrong. Hours after the claim was made by Paul, the Trinamool Congress stated that if this happened, this showed how democratic the party was, how democratic Trinamool Congress was, where the Trinamool Supremo apparently asked a former Trinamool worker to join back the party. Amidst the allegations and counter-allegations, what followed next was another audio tape, this time released by TMC. ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 আসবে 20। হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাবো, তুমি এমনি পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। In the audio, BJP's Mukul Roy can be allegedly heard briefing another leader, Shishir Bajoria, on how to influence the Election Commission. TMC claims that a day later, the Election Commission acted exactly how Mukul Roy wanted. The audio wars have now become a flaming issue with only a few days to go for polling in this winner-takes-all constituency, where Mamta goes up against her former confidant. In the escalating battlefield of Bengal, a few seconds of audio have lit perhaps the biggest fuse yet. Bureau Report, India Today. Mahafta Gate continues to explode. After staying mum for days, Chief Minister Uddhav Thackeray has now decided to order retired High Court judge probe into Parambir's allegations, accusing Anil Deshmukh, the Home Minister, of extorting money. Meanwhile, Sanjay Rawat has questioned Anil Deshmukh, asking how come he didn't know about these extortion allegations. In fact, Rawat also said that Deshmukh became State Home Minister accidentally, a remark that really didn't go down too well with the ally NCP. Eight days after explosive Hafta Gate allegations against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, the Uddhav government has finally decided to order a probe by a retired High Court judge, as suggested by Deshmukh himself. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होगी और जो भी सच है वो सामने आएगा।
But no end to rumbling in Maharashtra Vikas Aghadi. All seems not well between Shiv Sena and NCP. After initially backing Anil Deshmukh, Shiv Sena took an open dig at ally and beleaguered Home Minister Anil Deshmukh. In an editorial in Mouthpiece Samna, Sena MP Sanjay Raut claimed Deshmukh was not the first choice for State Home Minister's post under NCP quota. Raut said that R.R. Patil and Dilip Walse were the first choice. He also advised Deshmukh to end his silence on 100 crore extortion allegation by former Mumbai top cop Parambir Singh. Sanjay Raut's statement did not go down well with ally NCP. कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात. एकमेकाला कुठेतरी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून अडचणीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू नये. Opposition BJP meanwhile has called out Sena alleging hypocrisy and doublespeak on Deshmukh. शिवसेना का एक और वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं. ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं. The fresh spell of bickering may shadow the Uddhav government's belated attempt to firefight after explosive allegations of links to tainted cop Sachin Waze and 100 crore extortion bid. With Pankaj Upadhyay in Mumbai, Bureau Report, India Today. In a massive breakthrough in Sachin Waze's probe, the National Investigative Agency today recovered many crucial proof buried in devices allegedly dumped in Mumbai's Meethi River. NIA sent in divers into that river there near Bandra Kurla complex, took Waze to the spot after crucial revelations by him during grilling. In fact, Waze had dumped several computer devices to destroy evidence in the Antalya bomb case. Crucial evidence like digital video recorders, computer CPUs, printers, number plates and quite many devices have been recovered from the river there by those divers. Days ago, NIA had taken Waze for the crime scene recreation at the Mumbra Creek, where key witnesses Mansukh Hiren's body had been found. In fact, that's what the witness had to say there. NIA sources meanwhile claim that the evidence recovered is very important and will help nail Waze in this case in court. A political storm there over A. Raja's derogatory remarks against Tamil Nadu Chief Minister EPS. Chief Minister gets emotional here during his campaign trail after A. Raja casts aspersions on his parents. AIDMK cadres now stage a protest, burning his effigy. Here's what really went by today. As war for Tamil Nadu get ugly and 100% personal, Chief Minister EPS gets emotional after DMK's A. Raja cast aspersion on his parents. என்னென்னலாம் பேசுவா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். இன்னைக்கு ஒரு முதலமைச்சருக்கே இப்படிப்பட்ட நிலைமை என்றால் உங்களை போன்றிருக்கின்ற மக்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பது? இதெல்லாம் ஆட்சிக்கு அதிகாரத்துக்கு வந்தால் இந்த பெண்ணுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது, தாய்மாருடைய நிலை என்னவாகுது சிந்தித்து பாருங்க. தயவு செய்து அது எனக்காக நான் கேட்கவில்லை. We can't even show you the vulgar statement by Raja that upset EPS. But here are some of Raja's derogatory jibes at the CM. In one, he compared EPS to Stalin's slippers. இது கூட இல்லாம முந்தா நாள் வரைக்கும் வெள்ளமண்டியில வேலை பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலினுக்கு போட்டினா அது என்ன விதத்துல நியாயம்? அந்த எங்களுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் போட்டிருக்க கால் செருப்புக்கு ₹1 உன்னை விட விலை அதிகம். After facing flack, A. Raja claimed he did not speak ill about the Chief Minister.
நான் பேசிய பேச்சுக்களுடைய 2-3 வரிகளை மட்டும் ஒட்டியும் எடுத்து நான் ஏதோ முதலமைச்சர் மீது அவதூறாக பேசிவிட்டேன் என்று சித்தரிக்கப்படுகிறது. நான் வந்து ஒரு கட்சியில் பொறுப்புள்ள ஒரு பதவியில் இருக்கிறவன், முன்னாள் அமைச்சராக கேபினட் அமைச்சராக இருந்தவன். முதலமைச்சரை அவதூறாக பேச வேண்டும் என்றோ அவர் புகழுக்கு களங்கம் வைக்க வேண்டும் என்றோ எந்த எண்ணம். But the damage is done. A. Raja is now in trouble. Chennai Police's Central Crime Branch have filed a case against A. Raja for using derogatory words which could have triggered riots. AIADMK is up in arms. Hundreds of party cadres and its women wing workers staged a massive demonstration against A. Raja in Salem. The AIADMK has also demanded the Election Commission to ban A. Raja from campaigning. AIADMK has upped the ante against DMK's leader A. Raja for his alleged derogatory remarks against the Chief Minister. The Chief Minister is currently campaigning across the state of Tamil Nadu. Now, MK Stalin, the leader of DMK, has also requested these party leaders to be careful about what they speak. However, a case has been filed against A. Raja under section 153, 294B and also for breaking code of conduct. Amidst all this, protests have also erupted across the state of Tamil Nadu, in Salem in particular, and Karur, demanding that A. Raja should apologize on the matter immediately. With camera person Divyan, Pramod Madhav. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.